He recently drew flack for his comments linking national identity and Hinduism on the floor of the House. And now BJP MP Yogi Adityanath finds himself at the centre of another controversy. In an undated video, Yogi Adityanath is seen proposing what he calls reverse jihad ploy and tells supporters to convert 100 Muslims for every Hindu girl who is converted. हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू Amid the love jihad rhetoric, the surfacing of an old video of BJP MP Yogi Adityanath has put his party on the defensive. Listen to this parliamentarian's counter to love jihad. अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। It's not the first time Yogi Adityanath has spewed venom. He is the same MP who led the BJP charge in Lok Sabha just 2 weeks ago. हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। BJP MP's rant triggering a massive furor, with the opposition latching on to the love jihad debate. Only a madman of Sikh mentality can give such statements. I strongly condemn. ये मैं समझता हूं कि इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही है, देश के अंदर सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है। Number of fiery speeches that the Prime Minister had made before elections, it is time that he breaks his silence and he speaks on the communal statements that are being made again and again by the BJP leaders. Clerics too slamming Yogi Adityanath for his communal comment. That such speeches are being given to polarize the vote bank. So my appeal to the general public is that they must remember this conspiracy. Under fire, the BJP MP claiming it is an old video, but not denying making the comment. And his weak defense only giving more ammunition to the opposition. Bureau Report, Times Now.